Good morning and a very warm welcome to all of you present today in this science class. Before going ahead with this, if we talk about little bit some of the situations of this pandemic situation, so we are able to observe here that is still day before yesterday or yesterday's newspaper was having the highest number of cases, that is around 15,000 again within this 24 hours. So this is what to say, that is we are also in a dilemma, that is whether this COVID is effectively getting reduced or it is fluctuating or it is continuously increasing. We cannot say anything because it completely depends on the number of the new COVID cases which are being getting or which are being spotted out in our city, in our state, in our country, or anywhere else. So starting with this, but apart from having all these situations, the best part is that the death rate is completely decreasing day by day, and at the same time the number of cases or the number of people who are getting recovered from this COVID-19, they are much more than the number of new cases. Like if 15,000 cases have been reported, so more than 15,000 people they have recovered also. Okay, so this is a really a good, very good sign for us, and let us hope, as all of us we know that our Punjab government has already opened the school from 6 to 8, that is 9 to 12 is already open, all of you know, but 6 to 8 has been opened by our Punjab government. So let's hope for this Uttar Pradesh as well, and let us resume the 1 to 5 as well within the new coming session. Starting with this, let me first and the foremost thing share the most important part, that is your syllabus, and thereafter we'll be going ahead with this. Okay. As this is our syllabus, and as per the syllabus we have here, that is December to January, we have to complete these three chapters, and we are up to the mark. That is we have been able to achieve our target in spite of having so many holidays which were coming in between this only, like your Makar Sankranti was there, then your 26th of January as well has taken one of our classes. So in spite of this also, we are able to finish our chapters, finish our classes and everything at a proper time. So in this chapter, that is in the case of your natural disaster here, this is our last chapter which is going on, and after this we are going to have our revision part, because we are no longer left behind with any of the chapters which are being left. So directly we will be going ahead with our revision part, starting with the diagrams of the periodic test 2, followed by the chapters from rocks and minerals, and in this way we will be able to complete it and at the same time try to solve some of the questions related to it in the form of worksheets. Most probably I will try my level best to have the Zoom classes, because in that I'll be able to spot everyone and I will be able to see whether each and every one of you are giving the test properly or not. Starting with this, let us have a quick view here. So let us in our previous Zoom class which we have taken day before yesterday, that is on Monday. Okay, so we have completed the first natural disaster, that was your earthquake. So now today we are going to start with the next one. If you remember, we have already discussed this part, that is we have found out where these natural disasters like your cyclone, drought, flood, earthquake and tsunami, they are present in this given puzzle. After that we have also discussed, that is how our environment is undergoing a lot of changes, what are the reasons for it, how it is going to affect the human beings, plants, animals and everything, all those things which are present on the surface of the earth. And at the same time we have also discussed, that is what we should do, okay, in order to prevent these natural disasters. Starting with the very first, we have discussed about the earthquakes. That was the sudden movement under the surface of the earth may cause vibrations on its surface,
These vibrations are known as earthquakes. An earthquake shakes the ground. This all these things we have discussed. Just because of these earthquakes, avalanche or your landslides can also occur. That is avalanche, when we are talking about, that is the large mass of snow falling as a result of the vibrations or just because of the shaking of the earth surface or the surface of the mountains, whereas landslide refers to the same thing, but here the entire land mass only gets fall down or in this way. Okay, moving ahead with this. So if we move ahead in this context, so we have discussed that is how this earthquake can be monitored, the study of earthquake known as seismology, what are the effects it is going to have, that is the dangers, loss of lives and property, everything. And at the same time we have also discussed that is how we can measure it. We can measure it with the help of Richter scale, that is 1 to 2 is not going to be felt by us or hardly be felt, whereas 3 to 4 can be felt. And the earthquakes which are above 7 on the Richter scale or Richter scale, they may cause widespread damage and destructions. Many tremors after tremors which are known as aftershocks, that is when the earthquake has come and gone, then also lots of vibrations or little bit vibrations keeps on coming, but very infrequently, that is either within a few hours or after few months the vibrations continues, but very infrequently or very rarely. Okay, so these are the destructions, if you can see, caused in the case of your earthquake. If you are able to see the buildings and everything, the entire thing is getting collapsed here, and since the earth surface only is getting collapsed or it is getting vibrated, so the base of your houses, they get disturbed, and when the base gets disturbed, whatever may be the number of floors here, all of the floors, they are going to be getting disturbed and damaged here. Starting with this, what are the things which you should do? That is your drop, cover and hold on rule, which is going to protect you at the time of earthquake. If you are not able to escape or if you are not able to move to a safer place, in that case you will have to follow this rule of drop, cover and hold on. Okay, starting with the next part, that is, let us start with our new natural disaster, that is your volcanic eruption. Okay, in the case of volcanic eruption, if you are able to see here, that is when molten lava, ash, dust and gases, they come out of a volcano with force, it is called volcanic eruptions. That is, if you remember, that is when we have studied that in case of earthquake there may be some kind of cracks which may be present, or when we have studied about rocks and minerals, so we have studied about the volcanic eruptions there also. That is just because of the intense heat which gets accumulated and finally it comes on the surface of the earth in the form of hot molten lava. Okay, so when molten lava, ash, dust and gases, they come out of a volcano with a force, it is called volcanic eruptions. That is just like the water coming out from your pipe or submersible or your what do we call, tool pumps. Okay, small pumps which are there, so all those supply waters or anything, just like water comes out with a force from those pipes, in the same way the volcano also comes out with a force, and it is quite hot molten lava as along with your dust, ash and various gases. Some eruptions may be followed by tsunamis, earthquakes and landslides. क्योंकि बहुत ही मोल्टेन लावा होता है, तो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ डिस्ट्रक्शन ही कॉज करता है. ऐसा नहीं है कि वो बहुत ईजिली फ्लो कर रहा है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, कोई डैमेज नहीं हो रहा है, लोग अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं. It is not like this. Okay, people, public property, private property, each and everything is getting disturbed just because of whether it is earthquake or any of the natural disasters. Okay,
सो सम इरप्शंस में बी फॉलोड बाय, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वॉल्केनिक इरप्शन के बाद आपका सुनामी आ जाती है, या अर्थक्वेक आ जाता है, या लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं, क्योंकि अर्थ के नीचे से ही तो ये हॉट मोल्टेन लावा आ रहा है। तो आते समय हो सकता है कि कुछ प्लेट्स हिल जाएं, थोड़े से वाइब्रेशंस और ज़्यादा होने लगे। सो इन दैट केस दे मे बी योर अर्थक्वेक or landslides even. Okay, the volcanic material may poison the soil and water supply in the area. It may also cause severe air pollution. अब देखिए, ये जो वॉल्केनिक मटेरियल मतलब वॉल्केनिक इरप्शंस में जो भी चीज़ें हॉट मोल्टन लावा या फिर उसके साथ जो भी चीज़ें बाहर निकलती हैं, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द सॉइल विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि सर्फेस ऑफ द अर्थ पे ही ये इरप्शंस निकल रहे हैं, और जब सरफेस ऑफ द अर्थ पे ही ये लोग निकल करके जाएंगे तो आपका जितना भी सॉइल रहेगा वो पूरा का पूरा अफेक्ट हो जाएगा, और उसकी फर्टिलिटी चली जाएगी, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो डेड कर जाएंगे, और वाटर सप्लाई इन द एरिया में गेट अफेक्टेड। वाटर सप्लाई इन द एरिया का मतलब क्या है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस नीचे से होता है तो हो सकता है पाइप्स फट जाएं। ओके, और आपको भी पता है कि ये मोल्टेन लावा तुरंत क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा सॉलिडिफाई होता जाएगा और रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहां तक भी है, कोई पाइप की सप्लाई है, कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वाटर सप्लाई या कोई भी चीजें हैं, जो भी इन हॉट मोल्टेन लावा के नीचे रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी गेटिंग बरीड अप, एंड एट द सेम टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू टेक आउट दोज पाइप्स और एनीथिंग दोज मटेरियल्स विच आर प्रेजेंट बिलो द हॉट मोल्टेन लावा। पहली चीज तो आप ये भी जान लीजिए कि इतना जल्दी कूलिंग प्रोसेस नहीं होता है। दिस हॉट मोल्टेन लावा बहुत ज़्यादा, मुझे भी बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन क्योंकि इनके टेम्परेचर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि 2 दिन 4 दिन में ये बहुत जल्दी ठंडे हो जाएंगे। ओके, सो इट कैन इवन टेक 10 days और इवन मोर दैन दैट टू reduce their temperatures so that any kind of human activity may be possible in those areas. Okay, next is it is also going to cause severe air pollution. अब क्योंकि हॉट मोल्टेन लावा तो ठीक है, वो तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे फैल जाएगा, बट व्हाट अबाउट द ऐश एंड द डस्ट एंड द गैसेस। ऐश मतलब कोई भी राख या फिर जो भी चीजें जल करके निकलेंगी वो चीजें। डस्ट पार्टिकल्स प्रेशर के साथ जब मूव करेगा, लावा सरफेस ऑफ द अर्थ पे मूव करेगा तो डस्ट पार्टिकल्स एंड द गैसेस विच आर कमिंग एज अ रिजल्ट ऑफ हॉट मोल्टेन लावा, इन सब का कंबाइंड इफेक्ट ये होगा कि एयर पोल्यूशन इज गोइंग टू बी एट इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट। ओके, scientists are now capable of studying volcanoes and predicting volcanic activities. मतलब अब क्या है, इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हो चुके हैं, इतना ज्यादा हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, that is people or the scientists, they are able to take some or the other precautions, they are able to provide or they are able to get to know, minimize the damage and anything. ठीक है, जितना कम से कम डैमेज हो सकता है, people as well as the government, scientists and everyone, they are trying to do their best only. Okay, so just like in the case of earthquake, थोड़ा सा पहले हम क्या कर पा रहे थे, उसको प्रेडिक्ट कर पा रहे थे, in the same way here also people or the scientists, they are able to predict the volcanic activities. People can be warned in advance about any possibility of an eruptions. Because of this, major damage due to volcanic eruptions can be avoided. People को warn कर दिया जाता है कि ऐसे ऐसे chances हो सकते हैं। okay? उसके बाद people के ऊपर रहता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं, या अपने आप को सेफ जोन में ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं। okay, that is completely up to them, because it is not possible for the government to take the responsibility of each and every citizen of India and to provide them with safest places. Okay, so some of them have to migrate to a safer places. अगर है तो वो लोग माइग्रेट कर जाएंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, आना रहेगा तो आ जाएगा, नहीं आना रहेगा तो they can come back to their homes and continue their normal lifestyle as per they were doing it earlier. Okay, so बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि ये टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस या रिसर्च जितने भी आगे बढ़ रहे हैं, तो इन सब का एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम मेजर डैमेज को रोक पा रहे हैं। ठीक है, हम माइनर डैमेज को तो भूल ही जाते हैं। ठीक है, आप छोड़ दीजिए, छोटे मोटे डैमेजेस तो बिल्कुल हैं, क्योंकि इतना बड़ा नेचुरल डिजास्टर है और छोटे मोटे डैमेज
चल सकते हैं, इट कैन बी टॉलरेबल। बट व्हाट अबाउट द मेजर डैमेज, जहाँ अगर जैसे नेपाल के अर्थक्वेक में हम लोगों ने पढ़ा कि 8,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, ओके, मोर देन दैट। तो अगर हम वहाँ पे टेक्नोलॉजी रहती या फिर हम लोग कुछ प्रिडिक्ट कर पाए होते थोड़ा सा पहले, तो हो सकता है 2,000 1,000 लोग या उससे बहुत कम मरे होते। ओके, सो इट इज जस्ट in order to save the lives of different kinds of people, the scientists and the government, they are continuously doing some or the other efforts in order to provide the best suitable conditions on the surface of the earth here. Each and every government, whether it is our or foreign or anywhere else. Starting with the next we have here, that is T tsunami, or basically T is silent here. So tsunami, okay, if you are able to see, tsunamis are caused by the high waves. High waves, अब ये मतलब समझिए कि tsunami is a Japanese word meaning harbor wave, harbor. Okay, these are very high waves that travel with great speed. They arise as a result of earthquake or eruptions of a volcano under the sea or ocean. चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसको समझने की कोशिश करिए। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, सॉरी, यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि इफ यू रिमेंबर when we have studied about the natural resources, और द रिसोर्सेज चैप्टर एक था, ठीक है, हम लोगों ने, या चेंजेस इन एनवायरनमेंट, किसी भी चैप्टर में हमने कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा है। ओके, सो कोल एंड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में आपने क्या देखा कि सरफेस ऑफ द ओशन के नीचे, ठीक है, डेथ होते होते उसके ऊपर सॉइल पड़ते पड़ते एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो सारे के सारे प्लांट ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट एनिमल्स फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि मतलब ऐसा नहीं है कि खाली अर्थ के सरफेस पे ही एक्टिविटीज़ हैं, अर्थ के सरफेस पे ही डैमेजेस हैं, अर्थ के सरफेस पे ही नेचुरल डिजास्टर्स हैं। नो, ओके, ऑल दीज एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस बिलो द सरफेस ऑफ द ओशंस एज वेल। और आपको भी पता है कि 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ ओशन, विथ वाटर ओनली। तो जब 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, इट मीन्स मैक्सिमम पार्ट इज कवर्ड विथ द ओशंस, and these activities are not only common to the land surfaces, but they are also occurring below the surface of the oceans or below the bed of the oceans or the floor of the oceans. So the same earthquakes which are occurring on the surface of the earth, when it occurs below the surface of the seas, ठीक है, यही earthquake जो हमारा land पे आया था, अगर यही earthquake हमारा sea के नीचे आ जाए, oceans के नीचे आ जाए, तो उसके वजह से क्या होता है, ये vibrations जो हमें, आप हाउसेस, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें कोलैप्स हो गई, तो उन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से वाटर क्या है, बहुत तेज़ी के साथ फ्लो करने लगता है, वाटर में वाइब्रेशंस आ जाते हैं, और ये वाइब्रेशंस की वजह से फ्लड आ जाता है। ठीक है, अब फ्लड आ जाता है तो कंडीशन आपके सामने है, अगर आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, और ये आपको मतलब पिक्चर देख करके पता चल जाता है कि दिस इज नॉट एन एनिमेटेड पिक्चर और मेड पिक्चर और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये कुछ एक्चुअल सिचुएशंस हैं जो होती हैं, जो अकर करती हैं। आप देख रहे हैं बाइक्स, कार्स, एवरीथिंग, द हाउसेस एंड एवरीथिंग, they completely get submerged in water because the high waves or the amount of water increases to a greater extent. तो चाहे ये earthquake या आपके volcanic eruptions अगर surface of the ocean के नीचे से आ गए, तो that is going to cause tsunami. Okay? अगर आप लोग को कुछ याद हो, मैं यहाँ सुनामी से को रिलेटेड कोई इंसिडेंट तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो कुछ समय पहले अपने इस सिटी वाराणसी में भी हुआ था। अगर आप लोग को याद हो तो वहाँ पे क्या था, बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। अगर आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछ करके, और प्लीज़ डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द जूम क्लास, ओके, एंड इफ आई एम नॉट able to remind it or recall it, please one of you just remind me, that is sir, we have to discuss over that matter as well. आप सभी लोग अपने पेरेंट्स से पूछिए, तो दे विल टेल यू द एक्सपीरियंसेस। ठीक है, बहुत साल पहले, दैट इज अराउंड 10 years ago और इवन मोर देन दैट, नॉट 10 years, 10 years के पहले ही
because I was also very small at that time. I was around 6th, 7th, or 8th, something like that. So a very heavy rainfall occurred here in our city or in this entire country only. जो भी हो, अब यहाँ पे तो दिखा था इफेक्ट, और जगह दिखा कि नहीं नहीं पता. As a result of which the flood came in our city, our own city, that is Varanasi, and since that is this Durga Kund and other areas, they are little bit far away from uh, your Ganga river or Ganga Ghats, Assi Ghat or Dashashamedh Ghat. बट द कंडीशन ऑफ गोदौलिया वॉज दैट, अब जो गोदौलिया का जो रास्ता जाता है, ठीक है, मतलब गोदौलिया चौराहे से मेन मंदिर की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो वहाँ पे पानी का फोर्स इतना ज़्यादा था कि जो आपके बीच में बैरिकेटिंग्स लगे रहते थे, ठीक है, इस समय तो रेनोवेट हो गया है काफ़ी, फिर भी एक डिवाइडर टाइप का बीच में है जहाँ पे हम लोग गाड़ी खड़ी करते हैं अपनी, ओके, पार्क करते हैं. तो पानी उधर से इतनी तेज़ी से आ रहा था कि द एंटायर व्हीकल्स, बाइक, साइकिल्स, ये लोग उस वाटर में फ्लो कर रहे थे. मतलब जो यहाँ पे पिक्चर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं कि कार्स और ये बोट्स हैं और ये सारी चीज़ें बह रही हैं. सम काइंड ऑफ सेम सिनेरियो बट विथ स्मॉलर व्हीकल्स, जैसे बाइक्स हुए, आपके साइकिल्स हुए, और इवन पीपल एज वेल. ठीक है, ये लोग मतलब पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि ये सारी चीज़ें बह रही थी आपके सामने से, क्योंकि जो लोगों ने बीच में पार्क किया था अपनी बाइक, साइकिल्स और कुछ भी, जब वाटर एकाएक आया बहुत फोर्स के साथ, ठीक है, तो पूरा न्यूज़ चैनल्स और उसमें भी देखने को मिला था कि एकदम पूरा वो उठ करके सीधे सीधे गंगा जी में बहे चले जा रहे हैं. तो वो एक सिनेरियो बहुत ही बुरा सिनेरियो था और ये एक्सपेक्टेड था कि वो और भी आगे बढ़ेगा, बट थैंक्स टू गॉड कि वो वहीं तक लिमिट रह गया और गोदौलिया के और बहुत ज़्यादा इंटीरियर ऑफ वाराणसी में नहीं आया, या आप कह सकते हो दशाश्वमेध घाट से बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं फैला वो चीज़. ठीक है, तो कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं. नेचुरल डिज़ास्टर अगर बोला जाता है इन लोग को, तो ऐसे ही नेचुरल डिज़ास्टर नहीं बोलते हैं. डिज़ास्टर का मतलब क्या, ठीक है, एकदम से तहस नहस तो है इनका, ठीक है, जैसा इनका मतलब है, जैसा इनका वर्ड है, वैसे ही इनका काम भी है कि नेचुरल डिज़ास्टर, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वोल्केनिक इरप्शंस हो, और योर सुनामी इज देयर, कुछ भी हो, ईच एंड एवरी नेचुरल डिजास्टर इज हार्मफुल फॉर अस एंड इट इज गोइंग टू कॉज अ ग्रेटर लॉस टू टू property as well as lives. Okay, so that is why children, I keep on telling you, or I keep on insisting you to please think about the environment. Okay, try to follow some of the eco-friendly techniques. ठीक है, जितने ज़्यादा आप इको फ्रेंडली टेक्निक्स अपनाएंगे, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू मच मोर. ओके, सो दिस इज देयर फॉर टुडे. ओके, इफ यू गो अहेड विद दिस लिटिल बिट मच मोर. Okay, so when these earthquakes or volcanic eruptions, they occur under the sea or oceans, water starts moving with a great speed and they result in flood. Okay, so deep in the oceans, tsunami waves can be just about a foot high, but as they travel towards the shore, they grow in strength and height. The waves can travel very fast, up to 800 to 900 kilometers per hour, and can be as high as 20 to 30 meters near the shore. Okay, अब इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब बहुत बड़ी बात हो गई. ओके, अभी पे देखिए, सॉरी यहाँ पे थे हम लोग. ओके, डीप इन द ओशंस, मतलब ओशन के नीचे जब भी ये अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शंस हुए, उसके वजह से जो भी सुनामी वेव्स जनरेट हुए, तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, वहाँ पे तो ये कुछ ही फुट के हो सकते हैं, मतलब 1 फुट, 2 फुट, 4 फुट, 10 फुट, इतने ही रहेंगे. लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो शोर के तरफ, शोर का मतलब है किनारा, ओके, whether they are moving towards the shore or to any other directions, okay, you will find that is they grow in strength and height. मतलब उनके पावर भी बढ़ जाती है और उनकी हाइट भी इंक्रीज हो जाती है. मतलब जो वाटर वेव्स की हाइट कुछ सेंटीमीटर्स थी, कुछ फुट थी,
अब वो 20 to 30 मीटर्स का मतलब आप समझ रहे हो, 20-30 मीटर्स हो गए कि आपके बिल्डिंग से भी ऊपर। ओके, तो आप इस तरीके से समझिए कि हाउ मच डेंजरस इट कैन बी। एंड नाउ इफ यू ट्राई टू हैव अ जस्ट लुक ओवर द स्पीड हियर, आपको स्पीड क्या मिल रही है, 800 to 900 किलोमीटर्स पर आवर। मतलब अगर ये आधे घंटे भी आए तो 450 किलोमीटर तक आपके पूरे के पूरी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ओके, अगर ये 10 से 15 मिनट भी अगर रुक जा रहे हैं तो भी समझिए 100 से 150 किलोमीटर। मतलब अगर वाराणसी में इस स्पीड से आता है कुछ भी, तो वाराणसी इज नॉट गोइंग टू टेक नॉट मोर देन 10 to 15 मिनट्स टू गेट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इतनी ज़्यादा जब स्पीड रहती है तो डैमेज भी उतना ही होगा। They strike the shore suddenly and their force can wipe out towns and cities near the coast. क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली किनारों पे जाकर के टकराते हैं, तो क्योंकि फोर्स बहुत रहता है, पानी बहुत ज़्यादा रहता है, तो सराउंडिंग सिटीज़ या टाउन्स क्या रहते हैं, सबमर्ज हो सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये सिटीज़ में एंटर करते हैं इनकी स्पीड बहुत ही कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि हिंड्रेंसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? जैसे कि जब तेज़ हवा चले तो सॉइल एक जगह से दूसरे जगह ना चला जाए, सॉइल इरोजन ना हो। क्यों? क्योंकि पेड़ लोग क्या करते हैं, बांध करके रखते हैं सॉइल को। इन द सेम वे द हाउसेस एंड एवरीथिंग, जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके वजह से क्या रहता है, ये वेव्स, जैसे हमारी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, आप सभी लोग जानते हो इसको, इस तरीके से समझिए कि व्हेन वी आर ट्रैवलिंग ओके ऑन द रोड्स, तो आप देखते हो कि क्या होता है, थोड़ा सा आप आगे जाते हो तुरंत ब्रेकर आ जाता है, फिर आप आगे जाते हो फिर ब्रेकर आ जाता है। तो जैसे ब्रेकर आता है तो आप क्या करते हो, ठीक है, अगर आप बहुत फैशनेबल हो या बहुत आपको जल्दी है तब तो आप नहीं अपनी गाड़ियों को धीरे करते हो। बट इफ़ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, सो यू इमीडिएटली slow your vehicle and you pass on to that breaker very calmly and thereafter you increase your speed। तो यहाँ पे increase speed वाला नहीं, बस आप breaker तक का मतलब समझिए कि all these houses, towns and cities they act like the breakers for your tsunami waves or for this water। तो जैसे ही वो सिटी में एंटर करता है उसकी स्पीड कम होने लगती है and that is why द ओनली द कोस्टल पार्ट, मतलब किनारे से सटी हुई जितनी रीजन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। किनारे से जैसे जैसे आप दूर जाते हैं वहाँ पे आपका सुनामी का इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। ओके, सो दिस वाज देयर फॉर टुडे। आई होप ऑल ऑफ यू वुड हैव अंडरस्टूड टिल हियर। ओके, नेक्स्ट पार्ट वी विल बी डूइंग इट द केस स्टडी, दैट इज व्हेन डज इट अकर्ड, लाइक इट अकर्ड इन नेपाल। ठीक है, फिर उसके बाद ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड और वी आर ऑलमोस्ट we are left behind with a little bit introduction, sorry, a little bit one of the case study, that is where this tsunami has occurred and in a destructive manner, and this was there for today. So please do have a thorough reading of the chapter, read the chapters carefully so that you will be able to understand it in a much more better way, and please don't try to behave or take the classes in the same way as you have taken on the Zoom class. ओके, मुझे नहीं लगता अगर उस हिसाब से आप लोग क्लासेस ले रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू। ओके, इट इज़ गोइंग टू हार्म यू ओनली। ठीक है, उसमें आपका कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, यू विल बी एट अ लॉस। ठीक है, वैसे हम सारे लोग लॉस में ही हैं, एक साल पूरा हमारा लॉस में ही गया है, whether in terms of economic conditions, whether in terms of knowledge, whether in terms of study or anything। आप किसी भी केस में देखेंगे तो हर केस में आप लॉस में ही हैं। ओके, एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस। So I request everyone to please pay attention during the classes, whether it is the Zoom class or any other classes. Okay, so this was there for today. Thanks a lot for being with me and have a superb day ahead. Thank you.